So today we will do the properties of, we have already done the properties of Lebesgue measurable set. Properties of Lebesgue measurable set. So if, what is the property? Statement. If E1 and E2 are measurable, if E1 and E2 are measurable, then E1 union E2 is also measurable. So let's come to its proof. E1 और E2 measurable है, right? इसका मतलब for any set A, since E1 is measurable, for any set A, measure of A is equal to measure of A intersection E1 plus measure of A intersection E1 complement. Right? Now E2 is measurable. Then for any set B, measure of B is equal to measure of A intersection E2 plus measure of A intersection E2 complement. Right? For any set A, you will write A is contained in R. For any set B, B is contained in R. A B is any set. So what we will do, we will take, on taking the testing set B is equal to A intersection E1 complement. A intersection E1 complement. So we will put this in the measure of B. So we will have measure of A intersection E1 complement is equal to M star A intersection E1 complement intersection E2, right? ये हमने किसकी जगह पे पुट कर दिया, हमने D की जगह पे, प्लस M star A intersection E1 complement intersection E2 complement, right? बेटा टू प्रूफ क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे. हम इस एक्सप्रेशन का नाम नंबर 2 दे देंगे, राइट? लेट इट बी द नंबर 2. जो मेजर ऑफ ए है वो जो है उसको हम नाम 1 देंगे. अब व्हाट टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि E1 यूनियन E2 मेजरेबल है, राइट? It implies for any set A, this must be either equal to, or there is only sufficient condition that we can prove that this is greater than or equal to M star A intersection E1 union E2 plus M star A intersection E1 union E2 its complement. This we want to prove, right? तो इसको सामने रखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे. Now from 1 and 2. अब 1 और 2 में हम क्या करेंगे? What we will do? Now 1 क्या है? M star A, which is equal to M star A intersection E1. ये तो पहले ही पढ़ा था. अब ये यहाँ पे था, यहाँ पे कौन था? M star A intersection E1 complement. Now I will put the value of this whole expression here. This is M star A intersection E1 plus M star. अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे. This is A intersection E1 complement intersection E2 plus M star A into A1 intersect A1 नहीं है, it's A only. A intersection E1 complement intersection
E2 complement. So we have put all the values, right? Now we know that the outer measure is countably subadditive. It means ये जो पूरा ये देखो ये अलग अलग पड़ा हुआ है ना, this one. It means this is greater than or equal to, एक ही m star लगाएंगे, A intersection E1 union A intersection E1 complement intersection E2, right? कुछ नहीं किया, इन दोनों का मेजर सिंगल में बदल दिया और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दिया एंड नीचे आप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ काउंटेबल सबएडिटिविटी ऑफ m स्टार प्लस m स्टार एंड हियर इज, आप इसको इकट्ठा कर देंगे बाय डिमॉर्गन्स E1 यूनियन E2 इट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट? अब आप देखो, आपको फाइनल आंसर में ये दो एक्सप्रेशन चाहिए, दिस वन एंड दिस वन, उसमें से एक आपका बन गया है। इट मींस इस पूरे को मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, राइट? सो आगे बढ़ेंगे हम। सो नाउ दिस इज इक्वल टू m star A intersection m star A intersection। अब इसमें से इसको हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, E1 यूनियन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2, राइट? पहले वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन था, अब ओपन को ही हमने क्या कर लिया, क्लोज। अब इसको आप अगर ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 प्लस जो इधर साइड पे था वो एज इट इज रहेगा, A intersection E1 union E2 its complement, right? So this is equal to m star A intersection, अब इसको ओपन करेंगे, दिस इज E1 union E1 complement, right? E1 बीच में इंटरसेक्शन, देन E1 union E2, इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है जी? प्लस ये वाला एज इट इज। सो दिस इज m स्टार A इंटरसेक्शन, एक सेट है साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन गया R, राइट? R इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2। सो R सेट तो सबसे बड़ा है, तो R की इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 के साथ करेंगे तो क्या रहेगा, दिस विल रिमेन A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, राइट? क्योंकि R एक पूरा यूनिवर्सल सेट है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस, प्लस m स्टार A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट। बस आगे अब कोई डेरिवेशन नहीं होगी। सो चल क्या रहा था, इट इंप्लाइज m स्टार A is greater than or equal to, it implies m star A is greater than or equal to m star A intersection E1 union E2 plus m star A intersection E1 union E2 complements. You can match with that, we have already done that, what to prove. So this matches with that, it implies E1 union E2। अब जब यहाँ पे आप बेटा रीजन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एज E1 union E2 is contained in R, that's why their intersection will have only E1 union E2। So therefore E1 union E2 is a measurable set, E1 union E2 is a measurable set, right? So now we will come to its corollaries. So this main theorem has been proved. Now we will come to its corollary. Corollary number 1. ये दो के बारे में था, एक E1 set measurable है, E2 measurable है, then E1 union E2 is also measurable. Now the union of finite collection of measurable sets
is measurable. The union of finite collection of measurable sets is measurable. That is, if E1, E2, if E1, E2 soon up to En, ये collection है, is a finite collection of measurable sets, then prove that union I running from 1 to n, EI is measurable. Right? So we will do it by the method of induction. एक के लिए है, दो के लिए, क्योंकि यूनियन की बात दो से पहले नहीं शुरू होगी. ठीक है जी. दो के लिए होल्ड करता है, प्रूव करेंगे. के लिए होल्ड करता है, लेके चलेंगे. k+1 के लिए प्रूव करेंगे. So we will do this by method of induction, principle of mathematical induction. Proof by principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. Step number 1. Step number 1. When n is equal to 2, as E1 is measurable, क्योंकि यूनियन की बात की है बेटा, यूनियन एक से नहीं बनता, यूनियन के लिए दो सेट्स चाहिए. E1 is measurable, E2 is measurable. Then we shall prove that E1 union E2 is measurable. Right? So we have already done in the previous theorem that E1 union E2 is measurable. ठीक है जी. So since आपको इसमें प्रूफ देना है पूरा. ठीक है जी. Since E1 union E2 is measurable set, it implies the result is true for n is equal to. It implies, यहाँ आप लिख सकते हैं union I running from 1 to 10, EI is measurable. ठीक है जी. ये हो गया n is equal to 2 के लिए. अब हम करेंगे n is equal to k के लिए, लेके चलेंगे. Step number 2. Assume that the result is true for n is equal to k. It implies union I running from 1 to k, EI is a measurable set. Right? Step number 3. To prove the result for n is equal to k plus 1. Consider union I running from 1 to k plus 1 EI. This is equal to, इसमें स्प्लिट कर लेंगे इसको. यूनियन आई रनिंग फ्रॉम 1 to k, यहाँ पे एक हो गया, और लास्ट वाला कौन सा सेट बचा? EK plus 1. बेटा ये भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, ये एक सेट भी मेजरेबल है. So this is the union of two measurable sets. ठीक है जी. ये मेजरेबल क्यों है? बाय स्टेप 2. ठीक है. और ये लाइन क्यों लिखी यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट? ये स्टेप नंबर 1. It implies a measurable set because union of two measurable set is measurable set. So it implies union I running from 1 to k
It implies union I running from 1 to k plus 1 ei is a measurable set, right? So it implies by induction, therefore by the mathematical induction, the result is true for all n belongs to simple. Now next is a corollary number 2. If E1 and E2 are measurable, ठीक है जी, then prove that E1 intersection E2 is measurable, right? Very simple. E1 intersection E2 क्या होता है? E1 intersection E2 पे पहुंचना है आपने, to come to its proof. अब E1 measurable है, E2 measurable है, तो E1 कॉम्प्लीमेंट और E2 कॉम्प्लीमेंट भी क्या होंगे? measurable sets. ठीक है जी, तो उनका यूनियन अभी हमने किया, द यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल, ये भी क्या होगा? मेजरेबल, ठीक है जी. इट इम्प्लाइज ये बन गया E1 इंटरसेक्शन E2, ये सिर्फ इसको अभी सॉल्व किया, ये भी क्या है? मेजरेबल, राइट? एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ measurable set is measurable, मतलब E1 intersection E2 इट्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये भी क्या होगा? मेजरेबल, और ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? E1 intersection E2 is measurable. हाँ जी, I hope this is clear to all of you. yes ma'am. ठीक है जी बेटा, I am leaving because I have some meeting with ma'am, so you may just revise all the things.